बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु परम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्य नाम सत सुकृत आदि अदली अजर अचिंत पुरुष, मुनिंदर करुणामय कबीर, सुरति योग संतायन, धनी धर्मदास, चुरामणि नाम, सुदर्शन नाम, कुलपति नाम, प्रमोद गुरु बाला पीर नाम, केवल नाम, अमोल नाम, सुरत स्नेही नाम, हक नाम, पाक नाम, प्रगत नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, ग्रंथमणि नाम, प्रकाश मणि नाम, उरत नाम, मुकुंद मणि नाम, पंच श्री हजूर अर्ध नाम, चार गुरु बंस 42 की दया। सब विधि मुझे मंगल करणम, हरनय शेष कलेश। सत्य नाम सम नाम नहीं, वरदायक वर देश। गुरु के सुमिरन मंत्र से, नाशत विघ्न यनन। तासे सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संग। बंदो चरण सरोज गुरु, मुझे मंगल आगा। जही सेवत नर होते हैं, भव सागर के पार, भव सागर के पार। साधु लगन कते न मेरे भाई, गुरु से लगन कते न मेरे भाई। लगन लगे बिनु काजन सरे है, जीव पर लय तर जाई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई, साधु लगन कते न मेरे भाई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई। मेरे गानार शब्द का भेरी, शब्द सुनने को जाई। सोई शब्द सुनी प्राण देते हैं, तनिको न मन में धराई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई, साधु लगन कते न मेरे भाई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई। तजी धन धाम सती होए निकसी, सत करने को जाई। पावक देखी डरे नहीं मन में, पूरी परे शरमाही। गुरु से लगन कते न मेरे भाई, साधु लगन कते न मेरे भाई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई। स्वाति बुंदलिए रतत पपिहरा, पिया पिया रत लाई। प्यासे प्राण जाए क्यों ना बही, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई, साधु लगन कते न मेरे भाई। गुरु से लगन कते न मेरे भाई। गोदलयानी जुरे जब सन्मुख शूराले कलराइए,
टुक टुक होय गिरे धरनी पे, खेत चांद नहीं जाई गुरु से लगन कति न मेरे भाई, साधु लगन कति न मेरे भाई, गुरु से लगन कति न मेरे भाई। चारो अपनी तन की आशा, निर्भय हो गुण गाइए, कहाए कबीर ऐसी लव लावो, सहज मिले गुरु आई, गुरु से लगन कति न मेरे भाई, साधु लगन कति न मेरे भाई, गुरु से लगन कति न मेरे भाई, लगन कति न मेरे भाई। सब धरती का गजर करो, लिखने सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुना लिखा न जाए। सायम चंद्र गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले याप समान, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्टपहर निरखते रहू, गुरु मूरत की ओर, गुरु बसे बनारसी, शीश समुंदर तीर, बिसरा रे बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर, लक्ष्य कोश में गुरु बसे, सुरती दियो पता, शब्द तुरीय सवार हुए, पल यावे चिन जाए, निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल भय माही, सब पर तेरी साहबी, तुम पर साहिब नाही, संज्ञा सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास, मन सा बाचा कर मना, जब लग घट में श्वास, श्वास श्वास में नाम ले, भृता श्वास मति को, ना जाने यह श्वास को आवन हो न हो, श्वासाती कर सुमेरनी, कर यजपा को जान, परम तत्व का ध्यान धरे, सोहम या पोया, सोहम पोया पवन में, बंधु सूरत सुमेर, ब्रह्म गात हृदय धरो, इस विधि माला पे, माला स्वाच सवास की, फेरेंगे कोई दान, 84 भर में नहीं, कटे काल तीफान, साँझ परे दिन या कभी, चक भी ना रोए, चल चक बात जाइए, जहाँ रही न दिवस नहीं होए, रैन की बिचुरी चाक भी, आन मिले पर बार, जो जन बिचुरे नाम सो, दिवस मिले नहीं रात,
सतगुरु मोहिनी बाजिया दीना अमर मोह शीतल शब्द कबीर का हंसा करे किलो हंसा तुम जन धरती हो पर मेरे परती अमर लोक पहुँचाई हो चलो सो भौजल जी भौजल में बहु का गहे कोई कोई हंसा हमार कहा ये कबीर धर्मदास सो देव उतारो पार विनवत हूँ कर जोरी के सुन गुरु कृपा निधान संतन को सुख दीजिए दया गरीबी ज्ञान दया गरीबी बंदगी समताशील करार इतने लक्षण साधु के कहाँ कबीर विचार धनियों पर धर्मदास है सत्य नाम कीते रहता पुरुष कबीर है चलता है सब भेष देर बराबर हो रही देर बराबर नाही तौल बराबर गूंगची मोल बराबर नाही केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर कारे हंस बिनती करे दर्शन देहु कबीर आनंद मंगल आरती सतगुरु सत्य कबीर जम के फंदा काट के हंस लगावे तीर ओ साही हंस लगावे तीर ज्ञान आरती अमृत बानी पूरन ब्रह्मा लेहू पहचानी जाके हुक्म पवन और पानी वाके गति कोई बेर ले जानी त्रिदेवा मेरे ज्योति भकारी निराकार की अकट कहानी यही आशा सब हिल मिलतानी भरम भरम भटके नर प्राणी दृष्टि बिना दुनिया बरानी साहिब चरयम हाट बिकानी सकल सृष्टि हम ही युत पानी शील संतोष दया की खानी सुख सागर में करो स्नान मेरे भय पावो कर निर्वाण कहे कबीर सोई संत सुजाना जिन जिन शब्द हमारो माना जिन जिन शब्द हमारो माना। ज्ञान स्रोत कबीर सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा सत्य का नाम तेहु लोक छाज संत जन आरती करे प्रेम तारी धरे ढोल निशान मृदंग बाजा भक्ति साची किया नाम निश्चय लिया शून्य के शिखर ब्रह्मंड गाजा सत्य कबीर सर्वज्ञ साहिब मिले भजो सत्य नाम क्या रंग राजा हम दीन दुनी दरवेशा हम किया सकल परवेशा हम दुआ सलामत लेखा हम शब्द स्वरूपी फेंका
हम रोंद मोंद में पीरा, हम फाका पकड़े फकीरा, हम रमे कौन के नाम, हम चले कौन के चाम। हम सर्वगी सहजे रमे, हम रावार न पार, पार भी हम ही पार भी हम ही, नाना दरिया तीर। सकल निरंतर हम रमे, हम गहरे गंभीर, खाल की खलक खलक के माही, यो गुरु कहे कबीर। सत्य नाम की आरती, निर्मल भया शरीर, धर्म दास लोके गए, गुरु बहिया मिले कबीर। धर्म दास लोके गए, छोरी सकल संसार, हंसन पार उतार ही, गुरु धर्म दास परिवार। सत्य सुकृत लौलीन है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर, अजावन वहाँ पुरुष है, सो गही लागो तीर। सत्य सत्य का भया प्रकाशा, जरा मरण की छूटी आशा, शब्द बिन से देहि, कहे कबीर हम शब्द स्नेही। पांच तत्व तीन गुण पील, रमता रहे शब्द सो खेल, कहे कबीर सो हंस हमारा, बहुरी न देते जमते द्वारा। राहुर काल पर दिया, दुर्बल तोर शरीर, सत्य सुकृत के नाम है, थे वे सत्य कबीर। भव भंजन दुख परिहरन, अमर करण शरीर, आदि उपाधि आप हो, गुरु चारो योग कबीर, गुरु चारो योग कबीर। विज्ञान स्रोत। अति लौली ने चिन्हन्ते ज्ञानी, शब्द स्वरूपी सुनयाकाशे बानी, बिना देह साहिब निरालंब जाने, जाने जनावे कहाँ वे न देवा, ऐसा तत्व पूजे पूजावे लगावे न सेवा। सराधा में धारिया कंडो निरासा, शुद्धा सिंधु पीवे ना जावे पियासा। परम धाम धीरा उदासी अकेला, लौली ने जोगी गुरु ज्ञाना मिला। मिलंता चलंता रहंता या पारी, ऐसा दृष्टि देखो अनंतो विचारी। सराचेत चेतन चितवंत सूरा, ऐसा ख्याल खेलंत बुझंत पूरा। ज्ञानो ना ध्यानो ना मानो ना ठानो, नहीं चंद्र तारा ना उगे ना भानो। आगे ना पीछे ना मध्य ना कोई, जो का जाला ब्रह्म त्यो तत्व सोई। डालो न मूलो न वृक्षो न छाया, जीवो न शिवो न कालो न काया। दृष्टि न मुष्टि न देवी न देवा, जापो न ठापो न पूजा न सेवा। नहीं पवन न पानी न चंद्रे न सूरा, अखंडित ब्रह्म सोई सिद्धि पूरा। हम नाही तुम नाही बंधो ना भाई, निराधार आधार रंको न राई। गावे न ध्यावे न हेली न हेला, नारी न पुरुषो न खेली न खेला। नहीं पेत पृष्टि न पावो न माथा, जीवो न शिवो न नाथो अनाथा। शेषो महेशो गणेशो न ग्वालम, गोपी न ग्वालम न कंसो न कालम। आसे न पासे न दासे न जीवा, आवे न जावे लगावे न सेवा।
नहीं वारे पारे न मदिये न तीरा, जो का त्यो तत्व गहरे गंभीरा। जंत्रे न मंत्रे न दर्दे न धोखा, नरके न स्वर्गे न संशय न शोका। सेते न पीते न समझे न लालम, गोरे न सद्भरे न वृद्धे न बालम। भेरा ना खेरा ना कोई, सरासुरती सोहम एके न दोई। जाने जनावे न शूरा, पूरे न नियरे न दूरा। नारे न बिंदे न जिंदे न जीवा, निरंतर ब्रह्म जहाँ शक्ति न शिवा। नहीं जोग जोगी ना भोगी ना भुक्ता, सच्चिदानंद साहेब बंदे ना मुक्ता। खेले खिलावे और खेले, चेते चितावे और चेते। देखे दिखावे और देखे, एके याने के सोए के। याने के सोए के। चित विलास चित गुण चित विलास दास सो अंतर नाही। आदि अंत और मध्या सदा सो ब्रह्म गोसाई। अगह गहन में नाही, गहनी गहिए सो कैसा। सो हम शब्द समान, आदि ब्रह्म जैसे का तैसा। कहे कबीर हम खेले सहज स्वभाव, अकह अडोल अबोल निरंतर ब्रह्म। सुरति सो हम सोई, खेले खेल खिलावत हम ही, जहाँ के तहाँ रसातल सब ही। ता सब ही मैं है एक समता, ता में आनी बसा एक रमता। वा रमता को लकई जो कोई, ताको आवागवन न होई। ओ हम सोई, ओ हम कीलक सो हम बाला। सो हम बोले रिसाला। किलक कमत कमोर कंकवत, ये चारों युग पीर। धर्मदास को शब्द सुनायो, सतगुरु सत्य कबीर। कबीर मिले धर्मदास को, लिख परवाना दी। आदि अंत की वार्ता, यही लोक की थी। गुरुमुख बानी उचरे, शिष्य साच करिमा। यही विधि फंदा चूत है, और युक्ति नहीं यान। साधु साधु मुख से कहे, पाप बसम हो जाए। आप कबीर गुरु कहत हैं, साधु सदा सहाय। साधु स्वरूपी गुरु रहे, गुरु स्वरूपी आ। मन सा वाचा करे मना, कहे कबीर यसता। बाजाना भया परती, सतगुरु आए भव जल जी। बाजा बाजे साहब के राज, मारा कूटा दगाबाज। हाजिर को हाजुर गाफिल को दूर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। सात द्वीप नौ खंड में, सो हम सत्य कबीर। सात द्वीप नौ खंड में, सो हम सत्य कबीर। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। Devotees will now join with Mahant Nirhu Sahib for this evening discourse, Bandagi Sahib. बोलिए सतगुरु
Kabir Saheb ki jai. Let's go ahead as we begin with an opening prayer. Hotana Tere Mana Tere Bachana Tera Surati Nirat Tera Hoy Kahe Kabir Tehi Das Ko Pala Na Pakare Koi Pala Na Pakare Koi ध्यायेत सद्गुरं श्वेतरूपममलं श्वेतंबरं शोभितं कर्णे कुण्डलश्वेतशोभामुक्तं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तारि शोभितकला परमासने सुस्थितं दयाविधीर्षु प्रसन्नं वरदं सद्गुरं तनमामि द्वैपदं द्वैभुजं प्रसन्नं वदनं Dvinetram dayalam silikantamathikalam Svetambari mekhala Chakranket rachna kachitam Vaishpantara bandagi Satguru yogdan sahitam Kabiram karnamayam Umbani maha agra kivani Tame yog santayin gyani Pratam shab surti nirmawa Namni akshar adar batawa Kabir नाम दिया अक्षर लीना अग्रबानी हंसन को दीना अग्रबानी अग्रान है अग्र ध्वजा पहराई कही कबीर रामदासो आदि शब्द विदेही आई अमर पुरुष को सुमरन कीना सुमिरन भजन जाप कर लेना सत्य नाम सुमिरो घट माही धर्म राय की पड़े न चाहिए कही कबीर रामदासो सत्य नाम निज सार यह सिमरन निज सुमिर के हंसा हुई भाव पार हंसा हुई भाव पार बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय. Devotees, as you join with us again, once again in this month of February, March, also known as Phagun, Sadhguru Kabir Sahib reminded us that, month after month denotes some importance for us in our devotion to attain liberation. So, in the previous months, you have heard of Iraj, which is patience. You would have heard of, the reminds of the path of virtues, and when we leave our ego and pride. And this month marks, in this, it says here, Phaguna Phika Tumamata Bhako Mita Bajana Bulana Neki Bari Sabi O Sahi Gam Khai Rahana इसी में साहेब है मिलना यही बात में मोक्ष मुक्ति है भव सागर चरना. So Sadhguru Kabir Sahib is reminding us this month of Phagun reminds you to be happy and tolerant. Mita bachana bolana, that you speak sweet words. Be tolerant of every ways and keep your own under control. In this way, you can meet Sahib, cross this wall of delusions, and find liberation from the vicious cycle of the perpetual rebirths. The Sadhguru Kabir Sahib is reminding us about this month about to be tolerant. Tolerant means, willing to accept the behavior and beliefs that are different from your own, even if you disagree with it. To keep going despite difficulties. So tolerant means to keep going despite difficulties. Sadhguru Kabir Sahib is saying, in his teachings, he keep reminding us that many of us, for us, it might be very difficult for us to understand some of the things that he is saying. Why? Because just now in the
in the Sanja that I was singing, that let me just see if I can share that quote for you. It says here, Milanta Chalanta Rahanta Apari, Aisa Drishti Deko Ananto Bichar. That Milanta means that we'll be able, in this world we meet and greet with others, but as a devotee you must be, duty bound and steadfast, so you won't lose your sight on what your dreams are and what you want to do. Because when we mix, you may not be able to, many may fall for the mixture and then it won't become pure. Once there's mixture in it, it won't have pureness in it. So he says here, Milanta Chalanta Rakanta Apari. And Aisa Drishti Deko Ananto Bichari, that you automatically becomes what? A representative of the Sadguru. Sada Cheta Chetan Chitanta Sura, that you become, fearless in this world, and you be able, Aisa Kyal Kelan Uchanta Pura, that you be able to teach others about this Sadguru Kabir Sahib. Gyano na mano na tham. That it is because how difficult it is to understand. It is said that the Sadguru he is saying that he is not the subject of knowledge or meditation. Neither Nehi Chandra Tara na Uge na Man. And he is saying this because why? He's saying that the light that we see in this world, like what provide the lights in this world, is the moon, the sun, and stars. And that light is not sufficient for us to reach that abode of Satlu or heaven. So that's the reason why it is difficult for us to understand at times, what Sadguru Kabir Sahib is reminding us of things that we have to do, and that creates doubt for us in this world. So we must be very, very, patient and understand this teachings of the Sadguru, because this is our path to reach or attain liberation. So I was saying just now that the Sadguru, he is reminding us that the stars and the moon and the sun is not the sufficient light for us to reach. That he's saying that he is the light himself, and that's the reason why from him we'll be able to see beyond this realm. So let us recite that 2 or 3 sakis, and then we will probably read a chopai from the Poornima and close with it. So Sadguru Kabir Sahib is saying in the saki, Eka Shabda Guru Devaka Taka Ananta Vichar Take Muni Jana Pandita Ved Na Pavi Par. So he says here, Eka Shabda Guru Devaka, that one word of the Satguru, Taka Ananta Vichar, that it gives limitless meanings. Take Muni Jana Pandita, he said that only Munis and Pandits and things of this world, they become exhausted, they became exhausted trying to find its meaning. Ved, the Veda, he said Ved na pawe par, and even the Vedas could not find the depth of how the strong or how powerful one word or one shabd of the Sadguru is. So Sadguru Kabir Sahib keep reminding of this word, the shabd, this word, okay, and the Sat shabd that he instilled in us, that that so powerful is that's the reason why
it will take many to understand what Sadhguru Kabir Saheb is telling us. Hari Kripa Tabajani De Manav Avatar Guru Kripa Tabajani Mukti Kare Sansar. Sadhguru Kabir Sahib is saying, Hari Kripa Tabajani. It is because of the compassion of or the grace of God that we get this human body, this human birth. Guru Kripa Tabajani Mukti Kare Sansar. But it is because of the grace of the Guru that you can get liberation from this world, or you can, free yourself from the cycle of birth and death. So Sadhguru Kabir Sahib is saying that although we have this human body, we can still be a victim, be a victim of rebirth. And we must thank that Guru, who has enlightened us to liberate us from the cycle of birth and death. Jo toko katab boy, tako do tum phool, tako phool ka phool hai, wako hai trishul. So Sadhguru Kabir Sahib is saying, when someone puts stones on your path, you should put flowers on his. Why? At last you will get flowers, but he will get troubling thorns in the outcome or the results of that. So Sadhguru Kabir Sahib is saying that, no matter you are being, you can be obstructed or be, distracted from this world easily. He said that do not give up, never give up. Continue to be kind and gentle and share love with others. And, to wrongdoers, I think he said that you continue to do that. Why? Because he says, as you sow, so you shall reap. He says, share love and you will get love. And those who share troubles, he says that will certainly get troubles. Bhakti nisaini mukti ki sant chare sabadhai hey jin jin man alas kiya janam janam pachitai. They say bhakti nisaini mukti ki, that devotion is like a ladder, and you want to get mukti, devotion, you have devotion and you can get mukti. But there's something that you have to, that you have to put out. You have to climb that ladder how? With great love and effort. Devotion is a sacrifice that you have to make. And to get that sacrifice, he said that the saint and this Santa Charhe Sabadhe mean that the saintly ones, they put that effort to climb that ladder to complete their devotion. Jene jene man alas kiya. And he said those who did not do that and they played alas, be lazy to do what they have to do. Then what happens to them? Janama pachitai. That they keep regretting and repenting because they were unable to do that because they were being very lazy. They didn't want to make the sacrifice to complete their devotion. So now I will read a choppa or two from the Poornima birth, and then Boli Satguru Kabir Sahib ki jai. Satyaloka mein kina vasa Jagmag jyoti roma ujasa
अजर वस्तु का जाने हेरा कहे कबीर सोहंस अछेरा So he says, Satyaloka me kinha vasa. That, one will obtain this divine body and when they go to Satlok. But what will happen is Satguru will take them to Satlok so that they won't have to, they will obtain a divine body. Not this body with the five gross elements and the three gunas in it, but that body will be dropped and they will be going there, free from the attachment of this world. Ajara vastu ke jane bheda. Because the Sadguru Kabir Sahib is saying that Ajar mean in this world, what happened? We are caught with the vastu of the attachment of this world. So he will drop that for you and you will go to Satlok as in complete with a perfect soul. Uttama Chandana Pupaki Mala Bandhan Bar Rachi Dharmashala Vrati Hoya Sri Napar Se Tako Kala Khabina Gar Se. So he said, Uttama Chandan Puhupaki Mala. That the person who is performing this Poornima fast, they must use chandan and flowers and so to prepare and perform this fast. So he says that Bandhana Bad Rachi Dharmashala, give up all your bodily contacts with others. Vrati Hoi Sri Na Parasi, that everyone should do it on their own so they won't be connected. Because on that day is your surati with the Sadguru alone. Tako Kal Kabhi Na Garasi. Because the traps of Kal is set out in such a way that, it makes your mind think negative. Thinking, on that day you might want to, you should avoid being in contact with anyone, but be by yourself. Poornima ke din nema chara bahut bhanti so rahe ninara Poornima vrata kare laulai Tako Satguru hoy Sahai. So Poornima ke din nema achara says that on that Poornam day, that one should, everything to do, they should do it sincerely. Bahuta bhanti so rahe diwana. That you do it with your heart full of love and forget the worldly engagement. Poornima brata kare laulai. Oh, your heart must be full of love. Tako Satguru ho yasahai. And Sadguru Kabir Sahib, if a devotee does that, he always come to their help. He always come and aid them. Poornima masi sada nivasi Amar loka se ai dasi Yehi brata ko sanu ai Yaha brata mohi purush
lakhai. Punam masi sada nivasi. That he says that every month after month that one should observe this Purnima fast. Amara loka se ai dasi. And certainly he says that this fast will reach that eternal abode. Yehi brata ko sadhu hai. That Sadguru Kabir Sahib says that the Satya Purush himself has explained this breath for me to take to this world. And you know, in his thought he says that everyone should perform or observe this breath. Yaha brat hai sakalo sukhdai. Yahi brat se lok sidhai. Yahi upasana santana seva. Yahi upasana yapana vasudeva. So he say, yahi brata hai sakalo sukhdai. You see that observing this fast, it brings about happiness. And yahi brata so loka sidhai. And it puts you on that path of Satluk or heaven. Yehi upasan santana seva. That, you know, everyone should be, you know, on the fasted day, you must always prepare and serve the holy people. Yehi upasan apana vasudeva. Why? Because when you do that, we say that for yourself, you know, that death and will, you know, you will be able to overcome in this world easily. Poornima brata purush kare koi. Amar puri so ayo soi. Purusha jo man se kinha vichara. Poornima brata mukti Vistara. So he says, Poornima brata Purusha kare koi. That the Sat Purush himself has instituted this breath for us. Amara Puri so aye soi. That this comes from the eternal source himself, the Satya Purush himself. He Purush jo manase kinha vichara. That the Sat Purush, he, you know, he thoughtfully gave us this fast. Why? And when we observe this fast, you know, with all the rules and regulation, of course, the proper principles, it says that Mukti Vistara is the source of our liberation. Poornima Mahima Sune Sunawe. Chaurasi me bagurina awe. Poornima patanitane majo karai. Soprani bhavasagar tarai. So Poornima Mahima Sune Sunawe. That one should listen to this, or the greatness of this fast, and not only for yourself, but make others listen also about the greatness of this Poornima fast. Chaurasi me bahurina avi. And it says that if someone do that, they say they will never return in this world, in the cycle of birth and death, or to get rebirth again in this world.
Poornima Patandita Nema Jukare. One who practices this according to the principles of the fast, they what happens so prani se bhausagara terahi, that they will liberate themselves from this world. Boliye Satguru Kabir Saheb ki jai. Devotees, the time must go with us so fast. You all are invited to join us tomorrow at the ashram, where where we will have the program live and beginning at 7 p.m. And we ask you to come and join us tomorrow. Let's bow our heads as we do our closing prayer. Mala topi sumarani Satguru diya bakasi. Pal pal guru ko bandagi charan navavushi. How bhanjana dukha pariharan amar karan shari. Adi yugari apaho guru charo yoga kabir. Charan bandagi, charan seva, ajar mool bistar. Saheb Kabir ke bandagi पहुँचे उतरे से बार कहे कबीर सुनो धर्मदास चरण बंदगी गुरु प्रकाश ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी कुठारी भंडारी कत दर्शन चार संपदा पावन द्वारे चार गुरु वंश 42 की दया सकल हंस के बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे